Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am your host Syed Anwar Hassan and you are watching program Such to Yes Special. In our today's show, we are honored to have with us Her Excellency Miss Jane Marriott, UK High Commissioner to Pakistan. Thank you very much, ma'am, for joining us. You have been in Pakistan since July 2023. Tell us, how has been your experience so far? Oh my goodness, well, in some ways I feel like I only arrived yesterday, but in other ways I feel adopted of my new home country very, very quickly. So I think, Pakistan's friendliness, its hospitality, and just the incredible energy of its people already made me feel very at home within a month of arriving. So yeah, this definitely feels like home. That's great. And you have been to several parts of Pakistan. Yes. Tell us, our viewers, what are your priorities in Pakistan and what are the things of which you are proud of that you have delivered so far? So I'm really proud of the fact that the UK and Pakistan have got what we call a full spectrum partnership. Yeah. So we don't just focus on one or two areas as perhaps other countries might do, but our partnership covers everything from economic growth, of which we are very supportive. It covers climate change, it covers health, it covers education, it covers trade, which is only £4.4 billion. It needs to get higher. We've got so much more potential trading we can do between our two countries. And it also covers the fun things. So we've got a living bridge of 500,000 Pakistanis and Brits crisscrossing to and from each other's countries every year. So this job has got everything in it that one could ever hope for. I honestly think it's one of the best jobs that we have in the Foreign Office. And any highlight of your tenure? It's quite not that long, but you want to highlight that these things have been established and you have still many other targets or milestones to achieve. Yes. So I think, look, I'm really proud in particular of our work on family planning, enabling families, but women in particular, to plan when they have children, which helps them economically work out how many children are viable, when's the best time to have them. I'm really proud of our new climate financing facility, which we launched at the end of last year. That's very important. Pakistan is, one of the top 5 countries which are victims of climate. Yeah, no, it absolutely is, and it's not Pakistan's fault that you're the number one victims of climate change, but you absolutely are. And doing things now to get ahead of the curve is really important. We've already seen the floods in 2010, 2022. They're meant to be once in a generation, but I think we're going to see things like that come about quickly. But we're also going to see drought. So actually, in a decade, the biggest challenge here in Pakistan will be drought, not flooding. And sometimes a mixture of both. So even just raising awareness and having conversations of things like that. But our climate facility, our private sector climate facility investment programme, I think will be really important to bringing in private sector investment for climate resilience for Pakistan. The public can't afford to pay for it. The taxpayer can't afford to pay for this. We've got to utilise all the strengths that Pakistan already has. Yeah, that's great. Excellency, Pakistan and United Kingdom, they have a long shared cultural and historical ties. How do you see them shaping up in years to come? I think it's one of the reasons why Pakistan feels so familiar, actually, to British people, and why Britain feels very familiar to Pakistanis when they go there, because of that shared culture and understanding. And when, you and I talk, we understand each other on a very fundamental level, not just the exchange of words in English. And I think that's one of the things that really strengthens our links. And I know even our lovely American cousins, sometimes I feel I click more with my Pakistani brothers and sisters than I necessarily would someone who is also close. Of course, the Americans are our best friends, as always. So I think, just what that looks like in the future, I think it's about more visits. We've got, in the UK now, we have 1.6 million people whose heritage is Pakistani. They're British, but they have links to this country. And I also wonder if with migration and links like that, whether, yes, of course, nationalism still exists. The UK is a country, Pakistan is a country, but we now have these sort of third categories of people who can move between 1, 2, maybe 3 or 4 different countries according to their heritage, and bring with them the strengths of those different heritages to make us stronger, more multicultural countries. Many Pakistanis, they have made their names while migrating to UK. Sadiq Khan is, London mayor. Saida Warsi, we interviewed her as well. So it's a land of opportunity as well for many Pakistanis.
Pakistanis. Still, Absolutely. they have the chance to go there and develop themselves, or make a name for themselves. Absolutely. I mean, last year we issued about 160,000 visas for Pakistanis to go to the UK. The high take of student visitors to the UK. And it's very difficult to get admission into I know, UK universities. I know. But that's the high standards, right? But 160,000 Pakistanis visit, of whom I think about, don't quote me on this, I think about sort of 20,000 a year are students. Okay. So, there's 20,000 Pakistanis smart enough every year, but able to go to the UK. So what we're also looking to do is how do we bring quality education, British education, to Pakistan, so we can grow that partnership even further. And that's something I've been really impressed with seeing on the growth of that sector as well. That's great. You have traveled several parts of Pakistan, as earlier mentioned. Any, thing which you want to share? Any good experience or memorable? I know that I shouldn't compare the food in Lahore or Karachi because I will offend Especially whoever I don't choose. Exactly. Especially the biryani. So I'm always very careful, particularly in public, to hedge my bets on the Lahore versus Karachi food scene and say that I love both, which I do. But actually, I think one of my favourite trips was down to Multan to see the shrines. And heading up to the north, including to Chitral, just amazing mountains. And that's the thing, right? Pakistan, you have it all. You've got the history, you've got the geography, you've got incredible mountains, incredible plains. You really do have it all. And you will say that we have a potential to develop our tourism. Yes. Because as you have mentioned, we have 4 seasons in a different landscape. So that is a big opportunity. We are observing the holy month of Ramadan, and we are interviewing you during our Ramzan. How do you see the cultural tradition of Ramzan while staying in Pakistan? It's been fascinating to watch, although I have to say I'm not sure if I could do it. But clearly lots and lots of people do, so I'm sure I could if I had to. Just seeing the extra dedication above even normal high standards to community, to family, to seeing Ramadan as a time to reflect on one's place in the world, in one's community, helping others, the kindness. So, I learned very rapidly that iftars are not just about you and your family. It's also about that greater kindness and sharing and those spirits of compassion that also come through. So I've been really honoured to be able to host some iftars. And I have to say, and this is my personal prejudice coming out here, I don't like eating late. So when I do go to Lahore and Karachi and the invitation comes through and dinner is at 11 p.m. 11 p.m. I really struggle. So actually, the iftar timings, so to be able to kind of entertain early, I've actually quite enjoyed it. But I know, of course, my Muslim guests and my Muslim staff at the High Commission, we have a lot of local staff, but also a lot of British Muslims here. By the time they get to 8, whatever it is that day, 8:24, I think it is today, or 8:26. 6:24, sorry. Yeah, 6:24. I know that people are so ready you know for the that exact water. timings. Well, I've learned that it changes, obviously. with a minute, 2 or 3 minutes every day. Every day. Yes. Yeah, exactly. So what's your favorite iftar dish? You like samosa, Peshawar kebabs, Multan halwa? Oh, so Savayin, I think, is one of my favorites. Savayin, and I also like it. yeah, but I have to say dates. Dates, we break our fast with dates. There is just something so wonderfully lovely about a cup of tea and a date, and just eating it slowly as you prepare, in your cases, your bodies to get ready for the food you're about it gives to have. you a sugar, it lifts your sugar levels and things like that. It's a great month, and we were very pleased that when we saw the visuals of iftar hosted by His Highness King Charles in Windsor Castle. Many Muslims were there, so those visuals were very good and encouraging. Yeah, and what I really liked about that actually is it wasn't the Muslim elites in our society. It was anybody could apply. You could go to the website, you could apply for tickets, and people were chosen at random to go to that iftar at Windsor Castle. So it wasn't an elites thing, it was a for the people thing. Viewers, we are having an exclusive talk with Her Excellency British High Commissioner to Pakistan. We will take a short break. We will come back. Stay tuned and watch PTV News. Take a break. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया,
इस दुनिया में अपने ज़मीर से बढ़कर और कोई इंसान का मुहतसिब नहीं। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए ताकि जब अल्लाह ताला का सामना हो तो कह सकें कि आपने अपना फ़र्ज़ इंतहाई खलूस नीयत, दयानतदारी, वफादारी और तुमदही से इंजाम दिया। मुझे यकीन है कि आप इस जज्बे को अपनाएंगे और इसी के तहत काम करेंगे। Welcome back, viewers. We are honored to have with us Her Excellency Ms. Jane Marriott, British High Commissioner to Pakistan. We are having an exclusive talk, and we are talking about Pak-UK relations, her stay in Pakistan as High Commissioner, her initiatives, her fondness for Pakistani food. So, ma'am, we were talking about climate change as well, as you have mentioned that Pakistan, we are not emitting as much carbon as we are victims of climate change, and there are many disasters we have faced. You talked about climate finance, climate justice, you have talked about tourism. What would you suggest, what are the ways and means in which we can confront this challenge? So I think the thing with climate change is it quite often feels abstract, not to the people who suffered in the flooding in 2022. Yes. For them it was very, very real. For the people who are suffering the smog in Lahore, that's not climate change, Yes. that is a climate issue. But these are all really, really big issues. Yes. And when you're busy with your daily life, it's really hard to think, what can I contribute? How can I help challenges around climate change? And I'm really pleased that you've raised climate change, because I know that not all the media feel able Yes. to cover it, because the cut and thrust of Pakistan's daily politics Yes. are just such a soap opera, if I may say that. You know, they're Yeah. exciting, there's always Exactly. something happening, but actually those issues will keep repeating. But climate change is something that we actually do need to give more attention to, because it's so serious. But it's not as much fun, and that's why I think as a journalist it's quite Exactly. hard to cover it. So, you know, some of my favourite moments looking at climate change have been to go up to the north, to go up to the mountains, and for them climate change is absolutely real. There's not as much snow on the mountains. For the Yes. farmers, lots of Pakistanis involved in agriculture, they know, you know, your viewers who are listening We to haven't us had now, rain in winters. We Yeah. have a very delayed Yeah. rain spells. you know that the rain's not predictable anymore. Yes. It's not coming. It's coming at the wrong time. Yes. So you know, encouraging your government, as it already does, to participate in those COP dialogues, to push for change, to invest in climate financing, and to make it a national conversation issue, I think are really, really important. And we can all play a little role in that. I Exactly. actually had some of my favourite moments recently. We ran a competition for 13 to 24-year-olds in 2 categories about climate change. And we got the most phenomenal 500, 600 entries from Pakistanis doing either visual media, a story, or some sort of drawing about climate change. Like the kids today, they know what this is about. Yes. They know how worrying it is. Exactly. But also the talent and standard of entries. So we had one video that this 13-and-a-half-year-old girl had done in about 4 hours the night before the competition was due, where she sort of got her head and her heart, and she was sort of having a debate between, you know, Yes. what I want to do, what I should do, and about how she can contribute towards climate change. So there's real talent out there that can be harnessed. You're as we absolutely have right. that national conversation. Exactly, and media must have, you know, they must evolve some dialogue mechanism about those issues which you should be, you know, prioritized. Yes. Besides, we have a demographic dividend. We have a very young population in Yes. Pakistan. From 18 to 35 bracket, we have almost 60% of Yeah. population. What would you suggest that how we can utilize this demographic dividend to our advantage? Well, I think education is absolutely key. So Yes. having people who have got the right sort of education, and I don't necessarily mean book learning, Yes. although that has a place, but I also mean people who, you know, have learnt skills, who can, you know, take drip irrigation into farming. So Yes. linking it with climate Exactly. issue, flood irrigation is just not going to work. Yes. So how can we build up the skills? How can those young people start contributing and build up the skills on things like drip irrigation or vertical farming? So I think, you know, there's a lot of potential out there, but we're in a world where AI is becoming a reality, and where people are going to need to create more job opportunities in more small and medium
business enterprises. Exactly. And we try and support that through some of our schemes in the British High Commission as well. That's great. We were talking about Ramzan. Now we are in the third phase of Ramzan. Yes. So Eid is around the corner. Yes. It's a big festival. Have you celebrated Eid last year, and what are your plans for this year Eid? So I had a very quiet Eid last Quiet. year. Quiet, yes, I know. It's quite noisy Eid. But this year I'm going to be having a noisy Eid. I've accepted lots of hospitality from some kind Pakistanis to have a noisy Eid with friends and sort of families who've adopted me, Pakistani families who've invited me into their homes. And I'm very much looking forward to it. Yes, you're wearing a very nice color. It's Pakistani color, and Pakistan Day is around the corner. Thank you. Yeah, this is my Pakistan Day outfit, and I'm looking forward to the celebrations on Sunday. Tell us, ma'am, about yourself as a woman. I was reading your profile. You are highly educated. You had an elder sister who is your motivation. Yes. You have served in Kenya. Now you're in Pakistan. How does it feel to be a women diplomat working in Muslim countries? I mean, to be honest, this is not a life that I ever thought was accessible to someone like me. I started life in a small northern town. I went to our local state school. I didn't even know that diplomacy was a thing. Yeah. And then I've sort of taken steps and slightly more ambitious steps, and then found myself in the Foreign Office and suddenly representing my country, initially as a sort of junior diplomat, and then for the third time now as Ambassador in Yemen and High Commissioner Kenya and High Commissioner here. So my third time physically representing Great Britain. And it's just such an absolute honour to be able to do a job like this. I absolutely love it. You love it? Yeah, absolutely. And yes. when you were coming to Pakistan, what was your experience about Pakistan? And there is sort of a perception about a country, but when you land in a country, you experience real things. Yes. What were your impressions when you were appointed as High Commissioner to Pakistan and how these experiences have turned into reality, or they were quite different? So I cheated because I'd already been to Pakistan a couple of times previously. before I was appointed here. Yes, Okay. so I kind of knew a little bit what I was coming in for. And actually this has always been my dream job. Really? Because That's good. It's got everything that, from the challenges of terrorism and Yeah. security, through to development, through to the amazing diaspora, the trade, the climate. I mean, it really has got everything that a girl or a boy could ask for in a job. So this has always been my dream job, and I'm really pleased to be here. It's a happening country, as you have mentioned. There are Very many happening country. lows and highs in our daily life, as you have Yes. mentioned that war against terrorism, it's taking a brunt. Yes. We are facing this challenge, but people are quite lively. Any message you want to give to people of Pakistan from this platform, State Broadcaster, about Ramzan and upcoming Eid? Oh, I think I would just say, Pakistan, your hospitality is your greatest strength, of many, many strengths that you have. I have to say, the number of meetings that I've been in where my hosts have given me tea during Ramazan, and I'm like, oh no, I don't want to drink it, it's Ramazan. And they're like, no, you must have it. And this sort of strong Pakistani hospitality that overwhelms everything. And it's just, it's an example for me of the kindness and the large heart that Pakistan and Pakistanis have. So I think my message to the people of Pakistan would be to say Eid Mubarak when we get there. But for now, Ramazan Mubarak. Keep up the compassion, the kindness, the hard work, and know that Britain is always your friend. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Thanks for having me on, Anwar. Thank you very much. नाज़रीन, प्रोग्राम सचते में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। मुल्की सियासत की बात करें तो इरताश पाया जाता है। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहकर इनकार कर दिया पार्टिसिपेट करने से कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। तहम मुबस्सिरीन की राय में ये एक सुनहरी मौका था PTI की लीडरशिप के लिए कि वो इस इजलास में बैठते, अस्करी क़यादत से गुफ्तगू करते, मुकालमा करते, जो वो कौमी असम्बली के फ्लोर पर या मीडिया कॉन्फ्रेंसेस में या टॉक शोज में गुफ्तगू करते हैं, वो उनके सामने रखते। बारकैफ दूसरी जानिब मोतबर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आज आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल इलामा राजा नासिर अब्बास साहब, जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह है, और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह
महमूद खान अचकजई साहब से रब्ता किया है और उनसे कहा है कि वो इमरान खान साहब को कायल करें कि मुल्क की सियासत के माहौल को जरा ठंडा करें और जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम चल रही है उसे खुलकर सपोर्ट करें। वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत जो पाकिस्तान में मौजूद है उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दबाव का शिकार है। सरकारी सतह पर तहकीकात चल रही हैं और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बल्कि मीडिया इतलात के मुताबिक ये इस नुक्ते पर आकर तहकीकात आम पहुंची है कि जो 3 बड़े पीटीआई के अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, वो इमरान खान साहब के नाम जद करदा अफराद ही चला रहे हैं जो बैरून मुल्क हैं। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को मुतअद्दिद बार जीआईटी में भी जाना पड़ रहा है और यह भी खबर है कि अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, वो इमरान खान साहब की गुफ्तगू कंटेंट की सूरत में बैरून मुल्क जो उनके ट्विटर एक्स हैंडल्स को संभाले हुए हैं उन तक पहुंचा रही हैं, या जो उनके लिए व्लॉगिंग करते हैं या यूट्यूबर्स हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर राना सनाउल्लाह खान साहब जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी उमूर, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान साहब 9 मई के वाक़े पर सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांग लें तो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। इस टाइट को जो पीटीआई अपने आप को देख रही है, कैसे वो बाहर निकल सकती है, इन नुकात पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हुज़ैफा रहमान साहब ने, आप मामले खसूसी हैं बराए वज़ीर आज़म फॉर कल्चर एंड हेरिटेज। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सजते में वक्त देने का। हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर शौकत पराचा साहब ने और हम कोशिश करेंगे कि शौकत यूसुफजई साहब जिन्होंने हमसे कमिटमेंट की थी कि वो प्रोग्राम में शिरकत करें, अभी तक वो हमारे साथ शामिल नहीं हुए, लेकिन दौरान प्रोग्राम उनको लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया अपने मौजूद मेहमानों को। हुज़ैफा रहमान साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, राना सनाउल्लाह खान साहब का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान साहब 9 मई के वाक़े पर सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांग लें तो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो नुक्ता यही है, वो चाहे कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो या पार्लिमान की कार्रवाई हो या मुज़ाकराती अमल हो, वो उस सूरत में कहते हैं पेशरफ्त हो सकती है अगर इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए। क्या अगर वो सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगे तो रिहाई हो जाएगी? एक तो राना सनाउल्लाह खान साहब बहुत सीनियर हमारी पार्टी के पार्लियामेंटेरियन हैं, रहनुमा हैं, और उन्होंने जो बात की उनका ज़ाहिर अपना एक ज़ाती नुक्ता नज़र है वो, लेकिन चूँकि मैं उन्हें ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनकी जो हिस्से मज़ा है उसको भी समझता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब आप और मुझसे ज़्यादा इमरान खान को जानते हैं कि इमरान खान साहब जिस सोच के हामिल हैं, जिस तरह जिस किस्म की ज़िद्दी शख्सियत हैं और जिस किस्म की नाइत्तफ़ाक़ी को उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में फ़रोग़ दिया है, वो माफ़ी तो दूर की बात है, अपनी गलती भी कभी एडमिट करने की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर राना सनाउल्लाह साहब की बात को मैं बड़ा करूँ, बानी तहरीक इंसाफ माफ़ी मांगने पर भी आ जाएं तो ज़ाहिर है उनके जितने भी मुकदमात हैं वो अदालतों से वो कन्विक्टेड हैं और इस वक्त सज़ा याफ्ता एक कैदी हैं, तो उसमें हुकूमत सिर्फ इतना ही उन्हें रिलीफ फराहम कर सकती है कि जिन मुकदमात के अंदर हुकूमत मुद्दई है या हुकूमत प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश हो रही है, तो उन मुकदमात में हुकूमत जो है अगर वो माफ़ी मांग ले और राना सनाउल्लाह साहब की बात को मैं बड़ा कर दूँ तो हुकूमत उन्हें उस हद तक तो रिलीफ दे सकती है। लेकिन ज़ाहिर है बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करना और रिहा किस तरह किया जाना है और कब किया जाना है, ये ज़ाहिर है उन्हें रिलीफ अदालतों से ही मिलना है। अच्छा, लेकिन वो हुज़ैफा साहब आपने बात की, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चूंकि यहाँ पार्टिसिपेंट नहीं है तो लेट मी प्लेस अ डेविल्स एडवोकेट। वो कहते हैं इस पर जुडिशियल कमीशन आप बना लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जानिब से भी मुतअद्दिद बार कहा गया है। जी बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि मज़ीद भी फर्दर मैं जो बोलूँ उसमें आप एज अ डेविल्स एडवोकेट सवाब करें ताकि उनकी जो गैर हाज़िरी है वो हमारे जो आपके नाजरीन उन्हें महसूस ना हो। देखिए, पहली बात तो ये कि तहज़ीरात पाकिस्तान की जिन जिन दफ़ात के तहत इमरान खान साहब को सज़ा मिली है, पाकिस्तान का एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, अदालतें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर चलती हैं, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अगर एक शख्स जो है वो चोरी करे, वो डकैती करे या कोई भी जुर्म करे जो सज़ा याफ्ता जुर्म हो, तो उसके अंदर जो है आप जुडिशियल कमीशन बना के उसको रिलीफ दे सकते हैं। जुडिशरी की ऐसी कोई पावर नहीं है और जुडिशियल कमीशन जो है बेसिकली वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। जब भी आप जुडिशियल कमीशन को तश्कील देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो भी जज उसके अंदर जो कमीशन का काम कर रहा होता है वो बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियार के कर रहा होता है और उसका जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग्स जो है वो कभी भी, बीइंग लॉयर मैं आपको बता रहा हूँ, वो कंपल्शन नहीं होती, ना वो कोई कोर्ट ऑर्डर होती हैं। तो उसके अंदर भी अगर हम जुडिशियल कमीशन भी बना दें या कुछ भी करें, इवन के एनआरओ भी दे दें, तो एनआरओ देने के बाद भी इमरान खान को रिहा अदालतों नहीं करना है। हुकूमत यही कर सकती है कि अगर कोई ऐसी शक्ल निकल आए जो कि अभी निकलते हुए नजर नहीं आ रही,
तो उस शक्ल के अंदर भी मुकदमात वापस लेने के लिए भी अदालतों का रुख किया जाएगा। उन मुकदमात में रिलीफ लेने के लिए भी अदालतों का रुख किया जाएगा। अगर इमरान खान साहब ट्रायल कोर्ट से उन्हें मिल चुकी है बानी तहरीक इंसाफ को, तो हाई कोर्ट से रिलीफ देने हैं तो भी अदालतों में जाएंगे। तो ये मैं ये समझता हूं, जो मेरी एक दानिस्त है कि किसी भी एग्जेक्टिव ऑर्डर से इमरान खान साहब रिहा नहीं हो सकते। एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करने से कबल इमरान खान साहब को, बानी तहरीक इंसाफ को, आप अदालतों से रिलीफ लेना पड़ेगा। ठीक है। और चूंकि वो अदालतों से कन्विक्टेड कैदी हैं, तो कन्विक्टेड शख्स को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अदालतें ही रिहा कर सकती हैं। ठीक है, वैसे सदर भी एग्जेक्टिव ऑर्डर तो दे सकते हैं। दोबारा लौट के इस नुक्ते पे आऊंगा। शौकत पराचा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शौकत पराचा साहब, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है जिसको मैंने अपने इंट्रो में रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से महमूद अचकजई साहब और इलामा राजा नासिर अब्बास साहब से कहा गया कि वो इमरान खान साहब को कायल करें कि वो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को लोअर डाउन करें और जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं इन पे खुल के सपोर्ट करें। साथ में जो उनके एक्स हैंडल्स हैं और जो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उन पर भी वो जरा गिरफ्त चाह रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब हों या बैरिस्टर गौर साहब, इनको कोर्ट किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या ऐसी आपको, ज़ाहिर बात है अंसार अब्बासी साहब की खबर जो है वो ज़्यादातर हमेशा जो है वो हक़ाइक़ पर मबनी होती है, क्या इस हवाले से जो कोशिश की जा रही है वो कामयाब हो पाएगी? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि पार्टी खान साहब की है और खान साहब की पार्टी के लोग इस खबर के मुताबिक किसी और पार्टी को, किसी और रहनुमा से कह रहे हैं कि आप खान साहब से कहें कि खान साहब जरा हौला हाथ रखें। यही मतलब है ना इस चीज का। जी जी जी। तो फिर क्या मैं समझूं कि पार्टी और पार्टी के बानी, उनके दरमियान कोई इतनी बड़ी खलीज है जो कि पुर नहीं की जा रही और अब थर्ड पावर को कहा जा रहा है, थर्ड पार्टी को, कि आप मीडिएट करें। इसका दूसरा एंगल ये भी है कि खान साहब अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर ट्वीट किया। वो तो किसी मूड में नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई खत्म करने के, बल्कि उस ट्वीट में उन्होंने फिर 1971 का जिक्र कर दिया। उस ट्वीट में उन्होंने फिर वही बातें की जो इरिटेशन पैदा करती हैं, जो इरिटेंट हैं। अब यह रहा मसला कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत के हवाले से। आपने जरूर यकीनन उस दिन बैरिस्टर गौर खान जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनकी बात सुनी होगी। उनकी बात से तो तासुर ये महसूस हुआ कि वो आना चाह रहे थे कौमी सलामती कमेटी इजलास। 14 नाम भी शेयर किए थे चीफ विप आमिर डोगर साहब ने। वो तो एक दिन पहले की बात थी ना, लेकिन जिस दिन सलामती कमेटी का इजलास था उस दिन बैरिस्टर गौर खान साहब ने ये बात की थी। जी जी। तो अब यही लग रहा है कि पार्टी तो अपना कोई ना कोई किरदार अदा करना चाहती है, लेकिन बानी पीटीआई खान साहब वो नहीं चाह रहे। इनके ट्वीट्स के अंदाज से, उसमें शामिल मौज़ूआत पर और जिस तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, ये एक खलीज पुर होगी कभी? मुझे नहीं लगता कि खलीज पुर होगी। अच्छा। क्योंकि जिन सोशल अकाउंट्स की आप बात कर रहे हैं वो दायरे खान साहब के हुक्म से ही चल रहे हैं। ये थोड़ी है कि खान साहब का जो आइडिया है वो उन तक कोई किसी तरह से पहुंचता है और वो करते हैं, वरना वो अपनी तरफ से तो उनके आइडियाज नहीं है और खान साहब फिर ओन करते हैं उन सारी चीजों के। जहां ये बात हुई कि केसेस विदड्रॉ हों, पाकिस्तान में ऐसा हुआ है और ऐसा होता भी रहा है। अच्छा। मियां साहब की सजाएं थी, मियां साहब सजा से वापस आए तो आपने देखा कि एयरपोर्ट पर वही ऑफिशियल्स गए, उनके अंगूठे लगवा रहे थे, जो साइन करवा रहे थे। ये बात बड़ी अहम है। हुज़ैफा साहब ने जो बात की कि गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन वापस कर ले, अगर वाकई ऐसा हो तो जाहिर है फिर तो केस खत्म हो जाएगा ना। जब मुद्दई नहीं होगा, जहां स्टेट प्रोसिक्यूशन में या स्टेट जो उसमें मुद्दई है वो नहीं होंगे तो फिर केस कैसे चलेगा? इसलिए जो एक डिवीजन है जिसका मैं पहले इज़हार कर रहा हूं कि खला है और महाजराई है, उसके होते हुए ना तो हुकूमत केस वापस लेगी और ना ही जो है ना वो महाजराई की ख्वाहिशात रखते हुए खान साहब जो माफी की आप बात कर रहे थे। देखे ना 9 मई के 8 मई को इस साल जो पिछला 8-9 मई गुजरा, उसको आपको याद है DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और माफी की बात की। लेकिन उसके बाद खान साहब की तरफ से आया कि जी माफी तो उनको मांगनी चाहिए मुझे। एग्जैक्टली। तो
ये जो टकराव है ना, वो जब तक टकराव है इसमें ना कोई प्रोसिक्यूशन केस वापस लेगा और ना कोई माफी मांगेगा। एग्जैक्टली तो फिर हुज़ैफा साहब, सियासी मामलात को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? हुकूमत है आप, जाहिर बात है आप चाहेंगे कि जो इक्तिसादी मैदान में आपको बेहतरी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब का दौरा करके आए हैं। इसके अलावा जो है वो हम देख रहे हैं कि मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हैं, लेकिन दूसरी तरफ दहशतगर्दी की आग फैली हुई है और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आए रोज़ ये वाक़यात हो रहे हैं। पॉलिटिकल कंसेंसस और जिसे कहते हैं इत्तेफाक राय से ही हम इस दहशतगर्दी का अफरीद का मुकाबला कर सकते हैं। डिवाइसिव पॉलिटिक्स तो हुकूमत के बारे में नहीं है ना इस वक्त। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। मैं आपकी बात भी आगे बढ़ाऊंगा। मैं खुद इसी स्कूल ऑफ थॉट का हामी हूँ कि आपका जो मुआशी इस्तेहकाम है वो बराह रास्त आपके सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा होता है। और हुकूमत ने इसी बात को सामने रखते हुए कोशिश भी की, तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की दावत भी दी जी। और हर मौके पर ये कोशिश करते रहे कि अगर असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ एक मेजर स्टेक होल्डर है, अपोजिशन की एक बड़ी जमात होने के नाते, तो उनसे बातचीत की जाए। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश को पहले ठुकराया, फिर जब कबूल किया तो अपनी मर्जी से ही उस को जो है किसी हतमी नतीजे तक पहुंचे बगैर छोड़कर चले गए। अब भी आपने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो हुकूमत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वजीर आजम ऑफिस भी समन करके बुला सकता था जी, लेकिन वजीर आजम साहब की ही रिक्वेस्ट पर स्पीकर नेशनल असम्बली ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो सब कमेटी की मीटिंग है वो अपनी सरबराही में बुलाई, ताकि ये तासुर ना जाए कि हुकूमत ये जो है कमेटी की मेज़बानी करना चाह रही है और शायद किसी एक फरीक को हुकूमत के नीचे लगना पड़ रहा है या हुकूमत किसी फरीक के नीचे लग रही है। ठीक है। और आपने देखा कि फिर स्पीकर साहब ने सबको दावत भी दी। तो बानी तहरीक इंसाफ जिनका मकसद ही मुनासिब नहीं है मैं इस तरह की बातें करूं, लेकिन जो ज़रा फैक्ट सामने आ रहे हैं कि उनका मकसद इंतशार फैलाना है, ना इत्तफाकी पैदा करना है। पहले बात की गई कि उन्हें पेरोल पे रिहा कर दिया जाए। भाई उन्हें पेरोल पे रिहा कैसे करें? क्या वो कोई एमएनए है? क्या वो कोई सेनेटर है? अच्छा, फिर कहा गया कि तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी हो, तो हमने कहा जी तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए अपोजिशन लीडर मौजूद हैं, उमर अयूब साहब, और इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, ऑफिशियल जो उनके जो इस वक्त डेजिग्नेटेड ऑफिस बेरर हैं, वो ज़ाहिर बैरिस्टर गौहर साहब हैं। एग्जैक्टली। तो उन दो अफराद में से किसी को आना चाहिए था। अच्छा, अगर वो दो अफराद नहीं थे, किसी एमएनए को भेज देते। तो आप ये देखेंगे हुकूमत बड़ा दिल कर रही है और मुसलसल बड़ा दिल करती रही है। आपने देखा कि किस तरीके से मरकज पर एक सूबा चढ़ाई करता रहा, तहरीक इंसाफ के वजीर आला जत्थे लेकर आते रहे, उसको सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट फाइनेंस करती रही, लेकिन मरकज ने कोशिश की कि हम ऐसी कोई नाइत्तफाकी, ऐसा कोई जारहाना इकदाम, गवर्नर आज की तजावीज़ आई, ये सारी चीज़ें ना करें और एक जमात को साथ लेकर चले। अब देखें जो आपके सामने आया है कि तहरीक इंसाफ मुसलसल इंतशार की बात कर रही है, तफरीक की बात कर रही है, कौमी यकजहती के अंदर दरार डालने की बात कर रही है। आप ये देखें कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी सूबा कभी भी दाखिली और खारजी पॉलिसी नहीं बनाता। मरकज दाखिली और खारजी पॉलिसी बनाता है और सूबा उसमें साथ खड़ा होता है। अब मरकज ये कह रहा है कि चूंकि आपका अफगानिस्तान दहशतगर्दी का हब बना हुआ है और 35 से 40 लाख अफगानी यहाँ मौजूद हैं, उनमें से अगर 50,000 से 1 लाख लोग भी, जो आटे में नमक के बराबर है, वो लोग भी अगर दहशतगर्दों की सहूलतकारी करें तो पाकिस्तान में आग लगाने के लिए काफी है। तो उसमें एक सूबे का वजीर आला सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए और अपना नैरेटिव बनाने के लिए कह रहे हैं कि नहीं जी आप उन्हें कुएं में फेंक रहे हैं अफगानियों को। सिर्फ मकसद क्या कि वो 40 लाख व्यूअर्स आ जाएं, 40 लाख टिकटॉक पे आ जाएं, 40 लाख आपको रीट्वीट्स मिल जाएं। देखिए जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो फिर रियासत मजबूर होकर, मैं कह रहा हूं, फिर रियासत आनी हाथों से निमटती है। और अगर कोई जमात ये समझती है कि वो सियासी जो है वो शेल्टर में या सियासी शील्ड के अंदर बैठकर किसी दहशतगर्द तंजीम या किसी दहशतगर्द जमात या किसी दुश्मन मुल्क के नैरेटिव को यहाँ परवान चढ़ाएगी और मुस्लिम लीग नून की मरकजी हुकूमत या अफवाज पाकिस्तान या एस्टेब्लिशमेंट हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहेगी, ना ऐसा होगा, ना हम ऐसा करने देंगे। हमारी हद तक विसा कोशिश होगी कि जितनी अपोजिशन की जमातें हैं इनको दोबारा बिठाएं, बार बार बिठाएं, इनकी मिन्नत करना पड़े, इनकी मिन्नत करें। लेकिन अगर ये हुकूमत के हर ऑफर को हुकूमत की कमजोरी समझेंगे और ये समझेंगे कि किसी भी इलाके का एहसास महरूमी इस बात की इजाजत देता है कि वहां के निहत्ते लोगों को आप गोलियां मार दें, ना रियासत इस बात की इजाजत देगी। और इंशाअल्लाह ताला ये जो नई दहशतगर्दी निकली है इनका हम सर कुचल के आपको दिखाएंगे और दोबारा जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने 2013 में पाकिस्तान कॉमन का गहवारा बनाया था, दोबारा आपको बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, मैं टुवर्ड्स दी एंड शौकत पराचा साहब, सर आपको क्या नजर आ रहा है? अब रमजान के आखिरी अशरे में है, ईद के बाद आपको कोई हुकूमत मुखालिफ सियासी तहरीक के लिए इकट्ठ बनता नजर आ रहा है? मौलाना फजल रहमान, PTI और जो अपोजिशन इत्तेहाद है। देखिए PTI तो इसकी बड़ी कोशिश कर रही है और खुद बानी PTI इसके लिए
ख्वाहिश भी रखते हैं और अपनी पार्टी को भी हदायत दे रहे हैं। लेकिन जो पुराना उनका ट्रैक रिकॉर्ड है दूसरों के साथ चलने का, वो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ रुकावट है। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान किसी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचे हुए इस हुकूमत के खिलाफ। अभी उनके बड़े मुखालिफ हैं जो इस वक्त गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जनाब फैसल करीम खान कुंडी साहब, 4-5 दिन पहले वो मिले थे, गुज़श्ता रात कायरा साहब मिले थे। तो हुकूमती ओहदेदारान के साथ मौलाना फजलुर रहमान मिलते भी हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। ठीक है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अजीब बात है कि इलेक्शन के हवाले से या इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज्यादातर तो केपी से हैं, जहां पीटीआई की अपनी अक्सरियत है। मौलाना के साथ अगर धांधली हुई है तो केपी, और दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान। इसलिए शायद खाकान नवासी साहब की जो आप बात कर रहे हैं वो तो कह गए मेरे अपने शो में कि मैं किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनूंगा। लिहाजा वो तहरीक के मामले पर तो वो नहीं आएंगे आगे, लेकिन कम अज कम एक बात जरूर है कि आइन की हुक्मरानी को बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उस पे चलते रहेंगे। तो सरे दस्त हमें कोई तहरीक अगले महीने तो चलती शुरू होती नजर नहीं आ रही। ओके, बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, आपने प्रोग्राम सच के लिए वक्त निकाला। शौकत पराचा साहब, व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा शामिल करें। अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों को सामने रखते हुए कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेकर आएँ। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने हमसे कमिटमेंट की थी, लेकिन अगर रमज़ान शरीफ में अपनी कमिटमेंट को नहीं ऑनर कर रहे तो फिर आम दिनों में हम उन पर क्या सवाल उठाएंगे। बाहर का एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया नदीम कुरैशी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, मेंबर पंजाब असम्बली हैं, और इनसे अब नुक्ता नज़र जानेंगे। जो अब ब्रेक से कबल हमने हुज़ैफा रहमान साहब जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं, वो शौकत पराचा साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब। जानना चाहूँगा, अंसार अब्बासी साहब ने आज स्टोरी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो अपोजिशन इत्तेहाद में मजलिस वाहिदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं इलामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब से रब्ता किया कि इमरान खान साहब को ज़रा कायल करें कि सियासी टेम्परेचर को ठंडा करें, और जो ये इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं इन पर खुलकर सपोर्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जमात जो है वो तहकीकात फेस कर रही है। सोशल मीडिया में जो खबरें फैलाई जा रही हैं उस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी समझते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं बिलखसूस सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को नीचे रखना चाहिए? बहुत शुक्रिया शाह साहब। 100% मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूं, और मैं समझता हूं कि इस वक्त हम सब लोगों को इकट्ठे होकर दहशतगर्दी की इस वबा का, दहशतगर्दी के इस क्लैश का जो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, जो बड़ा डिसिप्लिन्ड है, और जिसको यकीनन इंटरनेशनली कुछ ताकतों की, बल्कि हमारे पड़ोस की ताकतों की बड़ी सपोर्ट हासिल है जी। लेकिन मैं एक सवाल ये भी करूंगा, क्या हुक्मरानों का रवैया इस तरह का है कि वो ये चाह रहे हो कि सब लोग इकट्ठे हो? मुझे तो हुक्मरान इत्तेहाद से, और बिलखुसूस जो PMLN है, उनकी जो लीडरशिप है उससे बहुत बड़ा एक शिकवा भी है और तकलीफ भी है कि वो हमेशा अपने लिए स्पेस लेने के लिए, अपने अपोनेंट की सरकोबी के लिए किसी भी किस्म की तकल्लुफ से ना वो रियायत नहीं करते। वो हर तकल्लुफ से आ रही है, और जब से ये बिलखुसूस बदतरीन वाकया हुआ है जाफर एक्सप्रेस वाला, जी जी, इस मुल्क को महफूज रखे, मैं नहीं समझता कि हुक्मरान इत्तेहाद के तर्जुमानों की तरफ से, ज़ाहिर है तर्जुमान भी वही गुफ्तगू करते हैं जो उनकी पॉलिसी, जो उनके पॉलिसी साथ उनको बनाकर देते हैं। मैं नहीं समझता कि उनकी तरफ से कुछ संजीदा। नदीम साहब, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी सर, जो पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, आप लोग उसमें जाते, अस्करी क़यादत मौजूद होती, आप वहां पर तमाम सवालात रखते जो आपके खदशात हैं, जो आप मीडिया टॉक शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, पार्लिमान के फ्लोर में नुकात उठाते, उनके सामने रखते। कम्युनिकेशन चैनल को आप लोगों ने क्यों इस अपॉर्चुनिटी को लूज किया एज ए पॉलिटिकल वर्कर? देखिए सर, दो जाशात हैं, बिल्कुल वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए था। अच्छा, लेकिन क्या कोई बात, क्या हुकूमत के रवैये में इस तरह की खैर खाही, खैर सगाली और दानिशमंदी थी कि वो हम एंगेज करते? क्या वजह है कि आप एक इतनी बड़े
इतने बड़े दहशतगर्दी के फ्लैश का मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, कोई शक नहीं है इसमें, ये हुकूमती इत्तेहाद का शख्स कहता है, ये दोहराकर वक्त लफ्ज जाया करने वाली बात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की जो क़यादत है, इमरान खान साहब जेल में है। क्या वजह है कि हुकूमत उनको इस कमेटी का, इस मशावरत का, इस मीटिंग का हिस्सा बनाने से गुरेज है। सर, हुज़ैफा रहमान साहब जो थे वो आपसे कबल बात कर रहे थे, वो कह रहे थे खान साहब कन्विक्टेड हैं, वो पैरोल पे, उनकी जो है जमानत, वो कैसे पैरोल पे बाहर आ सकते हैं? खुदा ना खास्ता कोई अजीज़ व अकारब में फौतगी हो जाए या कोई ऐसा कोई इशू हो जाए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है ना, तो पैरोल पे किस तरह पार्लियामान के इजलास से बुलाया जा सकता था? कुरैशी साहब, आप तो खुद एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। शाह साहब, खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत के लिए, शाह महमूद साहब के लिए, एजाज चौधरी साहब के लिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए, उमर सरफराज सीमा साहब के लिए, महमूद रशीद साहब के लिए और हमारे दीगर खवातीन और हजरात जो क़यादत भी है और जो वर्कर्स भी हैं, उनके लिए किस कायदे कानून पर अमल किया जा रहा है? राना सरोल्ला खान साहब ने बयान दिया है कि अगर इमरान खान साहब 9 मई के वाक़े पर सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांग लें तो उनकी रिहाई मुमकिन है। तो 9 मई के हवाले से देखें, ये तो आप लोग भी मानते हैं। अब तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब भी कहते हैं कि हमारे वर्कर्स ने, जिन्होंने पॉलिसी के खिलाफ एक्शन लिया, उनसे गलती हुई है। देखिए, मैं हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अगर गलती करता हूं, माफी मांगने का राइट भी, माफी मांगने की जिम्मेदारी भी मेरी बनती है। आप मेरे सबऑर्डिनेट है, मेरे बॉस है। मैं इमरान खान साहब तो खुद कैद में थे, इमरान खान तो हुकूमत की हिरासत में थे। शाह महमूद साहब की मिसेज आगा खान हॉस्पिटल में जेर इलाज थी, कराची थे। अनवार भाई, हमें दिल कुशादा करना पड़ेगा। मैं पीटीवी की पॉलिसी के मुताबिक गुफ्तगू कर रहा हूं, हमें दिल कुशादा करना पड़ेगा। हमारे फैसला साजों को, हमारे हुक्मरानों को अगर दिल कुशादगी नहीं वो करेंगे, हम मुश्किल में जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो लोग 9 मई में, कई ऐसे में मुल्ज़िमान है, मैं आपको थाउजेंड्स में, मैं सैकड़ों में फहरिस्तें दे सकता हूं लोगों की जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनको तमाम केसेस से साइड पे कर दिया गया। 4-5 केसेस में मैं खुद मुल्जिम हूं। जिन लोगों ने मेरे वो कुलीग्स थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, वो उन केसेस में उनको बेगुनाह लिख दिया गया, जो चालान कोर्ट में सबमिट हुए, और हमें सबको गुनाहगार लिख दिया गया। कुछ केसेस है जिनमें मैं भी मुल्जिम हूं, शाह महमूद साहब मुल्जिम है, नवाज बफी साहब भी मुल्जिम है, मलिक आमिर डोगर भी मुल्जिम है। हम सबको गुनाहगार लिख दिया गया, और जिन 2-3 अहबाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी बदल दी, उनको बिल्कुल बेगुनाह कर दिया गया। तो ये कौन सा इंसाफ है? मैं अभी से आगे बढ़ता हूं। मैं समझता हूं तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये चाहती थी कि खान साहब अगर नहीं आ सके, चले हमें मुशावरत का मौका तो दे। इससे अगला स्टेप ये था, हम अपोजिशन है, हमारे साथ वहदतुल मुस्लिमीन है, हमारे साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, हमारे साथ महमूद नसीर साहब की पार्टी है। हमारी जो इत्तेहादी जमातें थी, उनमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो नहीं चाहते थे कि हम इस सलामती काउंसिल की कमेटी की मीटिंग का हिस्सा बने। हाँ, अगर तो क्या इत्तेहादियों की मुशावरत की वजह से आप लोगों ने हिस्सा नहीं लिया? क्योंकि आप लोगों ने तो 14 नामों की फहरिस्त शेयर कर दी थी, मीडिया में भी आ गई थी। आप ही के शहर के मलिक आमिर डोगर साहब चीफ विप हैं, उनका नाम भी शामिल था। 14 लोगों की नाम, ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस के नाम मैंने खुद पढ़े भी। देखिए, वो सब जो नाम दिए गए वो मशरूत थे। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है जी। इत्तेफाक बात है, जाती या सियासी खिलाफ अपनी जगह। पाकिस्तान जो संजीदा तरीन सियासी लॉट है, वो इस वक्त पाकिस्तान में हुक्मरान है। मैं आज भी समझता हूं, इमरान खान साहब हो, मियां नवाज शरीफ साहब हो, आसिफ जरदारी साहब हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, ये सब लोग इकट्ठे बैठेंगे। अख्तर बेंगल साहब हो, डॉक्टर अब्दुल मालिक हो, सनाउल्लाह ज़हरी हो, असलम रईसानी हो, जाम कमाल साहब हो, ये सब लोग इकट्ठे बैठेंगे। हम तो शदीद से इस मसले को हल कर सकेंगे। ये और लाठी और हुकूमती या रियासती मशीनरी का इस्तेमाल, ये भी एक हल है, क्योंकि दहशतगर्द जुल्म और बर्बरीत पे उतरे हुए हैं। लेकिन यहीं बलूचिस्तान में और दीगर इलाकों में आपके जो सर कतक इमाजत, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन आप ही के वज़ीर आला कहते हैं कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, अगवान जो यहाँ पर मौजूद हैं,
उनके हवाले से उनका मौक़िफ़ यह है कि उनको ना बाहर जाने दिया जाए, वापस ना जाने दिया जाए। देखिए कोई भी मुल्क है, अब वहाँ पर उनकी हुकूमत है, उनका इनखला, आप भी इसको समझते हैं। नदीम कुरैशी साहब, आपने उनको होस्ट किया है, एक तवील अरसे से होस्ट किया है। अगर वो उनके मुल्क में उनकी हुकूमत कायम है तो वो वापस जाएँ। मेरे ख्याल में ये फैसिलिटी, लिबर्टी ना आपको मिलेगी ना मुझको मिलेगी, इवन अगर हम अफगानिस्तान में रहें या किसी दुनिया के किसी मुल्क में भी रहें। दूसरा, मैं सोशल मीडिया के हवाले से ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, क्या आप भी बाकी समझते हैं कि जो आपके 3 बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, इनको पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट होना चाहिए, और आपकी जो लीडरशिप है, मौजूदा लीडरशिप, चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, तर्जुमान, उनका ज्यादा इस पे गिरफ्त होनी चाहिए? अच्छा, पहले हिस्से का जवाब देखिए। अली अमीन गट्टापुर साहब समेत मैं एज ए रुकन असेंबली, एज ए कॉमन पाकिस्तानी, एज ए मुहिब पाकिस्तानी, चूंकि मेरा पाकिस्तान मुझे उतना ही अजीज है जितना किसी भी और शख्स को है। मैं भी ये समझता हूँ कि हमें अपने अफगान भाइयों से, अफगान हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए। अगर हमने उनको 30 साल होस्ट किया है तो उनमें एक ऐसी नस्ल की है जो यही खेल कूद कर जवान हुई है। बिल्कुल, ये आपने एग्जांपल्स दिए हैं कि दुनिया के किसी कोई मुल्क नहीं चाहेगा कि वहां गैर मुल्की रहे, यहाँ हालात डिफरेंट है। वो 30 साल बहुत सारे अफगानों का वतन पाकिस्तान था, वो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हमारा भाई है, वहां हमारे बहन भाई रहते हैं। सर हमारा भाई है, ब्रदर मुल्क है, लेकिन सरजमीन इस्तेमाल हो रही है ना इन हमलों में। आपने जाफर एक्सप्रेस को सानिया, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, हैंडलर्स वहां पर हैं, फैसिलिटेटर्स वहां पर मौजूद हैं। हाँ, अब देखने की बात क्या है, देखने की बात क्या है, जो जिस तरह मुझे कम अकल शख्स को, कम इल्म शख्स को जो मैं समझ रहा हूँ, हमारा जो असल हमारा दुश्मन है हिंदुस्तान, मुझे कोई कहने में आ नहीं, मेरी कोई नहीं, ये आप कहें, ये हम भी मानते हैं, लेकिन दे आर यूजिंग दी लैंड ऑफ अफगानिस्तान ना सर। आप बातचीत की बात करते हैं, सादिक खान साहब जो नुमाइंदे खसूसी हैं वो इस वक्त काबुल में मौजूद हैं पाकिस्तान की तरफ से। वो हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन ताली दो हाथ से बचती है ना कुरैशी साहब। देखिए, मैं गुजारिश करता हूं, मैं अली गड्डापुर साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत बहुत सारी लीडरशिप का ये व्यू है, ये वो इस बात पर देखिए, किसी शख्स की राय होने का मतलब उसकी बदनीयत ही नहीं होती। उसकी एक राय, उसकी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं। हम समझते हैं कि अगर हमने अपने दुश्मन को जो वहां स्पेस लेने दी है, हमारा दुश्मन बड़ा मक्कार है, उन्होंने वहां स्पेस दी। एक वक्त था जब तालिबान ने अफगानिस्तान में टेक ओवर किया, अमेरिकन फौजें वहां गई, मुझे खुद बहुत सारे इंडियन चैनल्स पे बात करने का मौका मिलता है, तो वहां मातम का समा था, वहां शोर गुगा था, वहां कराएं थी, वहां चीखें थी। उन्होंने 2-2.5 साल के उस फेज में जो ये गुजरा है, उन्होंने वहां अपने पहुंच जमाए, अपनी मकारी से, अपनी साजिश से, अपनी फंडिंग से। जाहिर है जब वहां पर अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी इनकी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी। हिंदुस्तान का बच्चा, करोड़ों बच्चे स्कूल जाने से महरूम है, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग घरों में नहीं रहते, भूख से अमवात की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान दुश्मनी में कोई स्टेप पीछे नहीं जाते, वो हमेशा आगे रहते हैं। तो हमें भी संजीदगी से और मुअत्तल मिजाजी से अपने उन दोस्तों को, उस लीडरशिप को एंगेज करना चाहिए था। किसी सूरत पाकिस्तान पर हमलों की, पाकिस्तान के लोगों पर, पाकिस्तान की फोर्सेस पर, पाकिस्तान की पुलिस पर किसी को हमलों का हक नहीं है। और मैं एक पैगाम पीटीवी के जरिए देना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, हम अपने बहादुर जवान के साथ है। ऐसा नहीं हो सकता। हमारा सियासी इख्तिलाफ मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के साथ है, हमारा सियासी इख्तिलाफ मौजूदा हुक्मरानों को मुसल्लत करने के तरीकाकार की वजह से है। हमारा जो सियासी नजरियाती और ये जो हम जो तकलीफ में है, ये जो सब कुछ भुगत रहे हैं, इस हुक्मरानों को जो हम पर मुसल्लत करने के लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया गया, वो हमारे लिए ठीक, ये तो आप कह रहे हैं कि, लेकिन आपका जो सोशल मीडिया है वो ये लाइन नहीं लेता जो आप लेते हैं, जो बैरिस्टर गौर अली खान साहब लेते हैं। यही तो नुक्ता है जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपका जो सोशल मीडिया ऑपरेट हो रहा है ओवरसीज से, इमरान खान साहब का अकाउंट है या पीटीआई ऑफिशियल है, वो ये लाइन नहीं लेता जो आप ले रहे हैं। सर ये फर्क है इस पे। अनवर भाई, एक गुजारिश, इस तवक्को के साथ आप मुझे कोई 10-20 सेकंड देंगे बात करने। जी प्लीज। हमारे मुल्क का जो इस वक्त मसला है वो सोशल मीडिया है, कतन ऐसा नहीं है। हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, जुज है ना सर उसका, कि हम लोग डिजिटल दौर में सकता है, करोड़ों की तादाद में लोग अब डिजिटल मीडिया से अटैच है, लोग अपनी एक राय रखते हैं। मैं कॉमन पाकिस्तानी हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है सर, मैं पीटीआई ऑफिशियल की बात कर रहा हूं। कॉमन पाकिस्तानी बिल्कुल राय रख सकता है सर, मैं उसी जगह हूं। जब मैं ये देखूंगा कि एक ही वक्त में हमारी ट्रेन को अगवा किया जाता है, उसी वक्त में एमएनए के घर पर पुलिस रेड किया जाता है आदिल बाज़ई के, जब मैं ये देखूंगा कि पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी को जो पुरान इत्तेहाद के खिलाफ सियासी जद्दोजहद कर रही है,
उसके लोगों का, उसकी लीडरशिप का, उसके वर्कर्स का तो जीरा दुभर किया जाता है, उनकी तो रैकी की जाती है, उनको तो हुकूमती जो एजेंसीज हैं जो हुकूमत के जेरे इख्तियार है और जेरे इंतजाम है वो उनको तो पल पल वॉच कर रही होती है, तो उनसे ये दहशतगर्द जो बचकर ये वारदातें करते हैं, तो ये क्वेश्चन अगर किया जाए इतनी नागवारी क्यों महसूस होगी? मैं बाई गॉड रमजान शरीफ का महीना है, मैं उतना ही तकलीफ में हूं। अगर कोई कोयटा में बिलोच बच्चा मरता है छोटा सा सड़क पर, या कराची में या पंजाब में, मुझे तकलीफ होती है। मैं पाकिस्तान को खून में लहूलुहान वल्ला नहीं देखना चाहता, नहीं देख सकता। नहीं, कोई भी नहीं देख सकता, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल सर। ये जो हुक्मरान यहाँ बैठे हुए हैं, ये हुक्मरान जो अरबा रुपए की बारात ले रहे हैं, ये वो तमाम हुक्मरान जो पिछले 40-45 साल से मुख्तलिफ सूरतों में यहाँ हाकिम रहे। 13 साल से सर आप भी हैं माशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में। मैं ये सिर्फ एंड में चलते चलते जो इलामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकजई साहब से कहा जा रहा है कि वो खान साहब को कायल करें, तो क्या आपकी मौजूदा लीडरशिप कायल नहीं कर पा रही, स्पेशली सोशल मीडिया के हवाले से इमरान खान साहब को? लास्ट में जवाब दे दीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सलमान अकबर राजा साहब ने अडियाला जेल के बाहर दिया। इमरान खान साहब बार कह चुके, कई बार कह चुके कि हम मजबूत अफवाज के साथ ही मजबूत पाकिस्तान बना सकते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि हुक्मरान अपने हिस्से का जो काम करने की बजाय ये जो तोपों का रुख तहरीक इंसाफ की तरफ उठते हैं, और सोशल मीडिया वो कहां गई जी इनकी फाइबर बॉल, मुझे वो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करनी आती, जो अरबों रुपए आप लोग के बड़े तेज है कीबोर्ड वॉरियर्स, वो हर तरह की फायर वॉल का भी कोई ना कोई तोड़ निकाल लेते बार के। आप ऐसा नहीं है सर, वक्त मेरा जी नदीम भाई, आपने अच्छी गुफ्तगू की और पार्टी का मौक़िफ़ दिया। वक्त पर ख़त्म हो जा रहा है, बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने जो है वो हुकूमती नुक्ता नज़र रखा, शौकत पराचा साहब का न्यूट्रल व्यू आया था, और नदीम कुरैशी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से गुफ्तगू की। नुक्ता सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव हो, हमारा जिसे कहते हैं मिलिटरीली नैरेटिव हो, रियासती नैरेटिव हो, नुक्ता यह है कि दहशतगर्दी का मुकाबला हमने मिलकर करना है। रियासती कुव्वत, सियासी हम आंगी से तब जाकर इस अफरीद का हम कलाकमा कर पाएंगे। ये आज का शो था। कल इंशाअल्लाह 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान है। हम यही दुआ करेंगे कि पाकिस्तान इस तरह फलता फूलता रहे। कल भी हम शो करेंगे और इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सचते की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।